Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. And I hope that you all have enjoyed your vacations also and your life skill activities also. You all have performed really well. I have seen your life skill activities. Okay, so let's continue. Today I am going to continue a chapter second, hardware and software. Okay, so where I have left before the vacation started. So I was talking about input devices, output devices, and today I will tell you about software. Okay, so let's have a look at hardware and software in which we have discussed about input devices. So let's revise it again. What is hardware? See, a computer system is consist of two main parts, which is hardware and software. Hardware Hardwares are the physical parts of a computer system which you can touch and see, like CPU, mouse, keyboard, scanner, printer. Okay, so these all are the hardware. And softwares are the parts that you cannot see or touch and which works behind the hardware, जो hardware के पीछे work करते हैं. Those are called softwares. So in hardware, we have learned about input devices, means the devices through which we give the input to computer system like keyboard, scanner, mouse, joystick, light pen, microphone. Okay, so we have already discussed about these in all input devices. And next we have discussed about some output devices also, like monitor, printer, and speaker. And third is storage devices in which we store our data like CD, hard disk, pen drive. Some others are DVD. Okay, so today I am going to start what is software. You know about hardware, means the physical parts that you can see or touch, those are called hardware. Here I am taking example of music system. Okay, like what uh, what what is the use of a music system? We use music system for listening music. Okay, so you all can see the music system, you can touch the music system, like speaker is you can touch, the cassette tapes you can touch, but can you touch the song? No, we cannot touch the song. So because song is a kind of a software which we cannot see, but this song is running in the hardware. Okay, so softwares are the programs which we cannot see or touch but which runs behind the hardware and which are also used to make hardware run. Means कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो हार्डवेयर को वर्क करने में सपोर्ट करते हैं. ओके, एंड कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो हार्डवेयर पर रन करते हैं, लाइक सॉन्ग एग्जांपल इज. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. First is system software and another is application software. Okay, another example of software you can understand with the example of CD. Like if you have used the CD, so you can touch the CD, but the movie stored in the CD or the song stored in the CD, you cannot touch that song or movie. Okay, we can only see, we can only listen song, we can only see the movie, we can only watch movie, but we cannot touch. सो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. सी डी इज़ अ हार्डवेयर, बट जो भी सी डी में स्टोर किया हुआ है वो क्या है? सॉफ्टवेयर. ओके, लाइक आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट आई पी ओ साइकिल इन द बिगनिंग, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल. तो इनपुट प्रोसेस में व्हाट हैपेंस, वी गिव इनपुट यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड और माउस. ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो प्रोसेस होते हैं. सो बिहाइंड दिस प्रोसेस, वो प्रोसेस कैसे करना है, हाउ टू एग्जीक्यूट योर instruction, how to complete the process, how to perform your task. Suppose you have given addition, so how to do that? So for performing your task, for performing the process, सॉफ्टवेयर्स वर्क बिहाइंड दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस के पीछे क्या सॉफ्टवेयर्स वर्क करते हैं, बिकॉज यू नो इट वेल दैट कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग बाई इट्स
ओन, कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं करता है. इफ़ यू, अगर आपको कुछ भी करवाना है देन यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन, कि आपको उसे कमांड देना होता है. तो those instructions, those commands are stored in a software also. मीन्स कोई भी प्रोसेस कर के पीछे सॉफ्टवेयर्स वर्क करते हैं. एंड एट द लास्ट वी गेट आउटपुट यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस. Okay, so processing is done by software. It takes the input from the user, processes it and displays the output on the monitor. Okay, thus we can define software is a set of instructions given to the computer to do particular work. Okay, so how we can define software? We can define software as a set of instructions given to the computer to do particular work. Okay, now there are two types of software. First is system software and second is application software. Okay, so what is system software? System software means is also a collection of instructions, okay, or set of instructions, but these softwares are designed for system purpose, for controlling the internal प्रोसेस ऑफ सिस्टम. आपके सिस्टम का जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, जो इंटरनल टास्क हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाते हैं. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अ कंप्यूटर रन. मीन्स जो बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक विंडोज 10, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, these all are operating system. Suppose if there is no operating system in your system or laptop, so can you use your system? No, use नहीं कर सकते, because operating system is very important. Okay, it also manages the link between the different parts of a computer and user. Like the operating system, it provide the interface. Suppose आपके system में Windows नहीं डला है, कोई भी operating system नहीं डला हुआ है, then as you will open the system, तो what will display on the monitor? Nothing will be displayed on the monitor, it will be blank. Okay, like say you can understand with the example of this car. See, there is car in a house, it has petrol, engine and wheels, but it's not moving. When the car will move? When the driver will start it. We need a person जो कार को चलाएगा, है ना. Like the driver is the operator of the car. Similarly we have, अगर आपके पास सिस्टम भी है, you have input devices, output devices, सब कुछ है, बट अगर उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला, उसको चलाने वाला नहीं है, मीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो it will not work. Okay, operating system is the driver of a computer which makes it run. Without an operating system, a computer cannot work on its own. Okay, so this is about operating system, which is a system software. Now come to application softwares. Okay, so application softwares are those softwares which perform a specific type of work. मीन्स स्पेसिफिक मीन्स जो अलग अलग वर्क को करने के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं. लाइक सम सॉफ्टवेयर्स आर डिज़ाइंड फॉर पेंटिंग पर्पस. यू हैव वर्कड ऑन टक्स पेंट पर वर्क किया हुआ है, अच्छा पेंट पे किया हुआ. ओके, सो दो सॉफ्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फॉर टाइपिंग पर्पस, टाइपिंग करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर्स हैं. गेमिंग पर्पस के लिए अलग सॉफ्टवेयर्स हैं. लाइक हियर यू कैन सी, आई नो यू ऑल हैव प्लेड दिस गेम फॉर मेकिंग केक्स, है ना. So for gaming purpose, different softwares are made. So these all are the kind of application software which are designed for different types of work. Like at our home, we have juicer for making juices. Okay, but using juicer, you can only extract juice of fruits and vegetables. Okay, means it has its own work. है ना. ऐसा तो नहीं है कि जूसर से हम लोग सिलाई कर सकते हैं या खाना पका सकते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज ईच मशीन हैज़ इट्स ओन वर्क. सिमिलरली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका एक डिफरेंट वर्क रहता है. ओके, सो
here, like see, MS Paint. This is an application software which is used for drawing pictures. Okay, and games, for gaming purpose different softwares are made. Gaming में different types के software होते हैं. This is for making cakes. This is the game of making cake. नेक्स्ट इज वर्ड पैड. एज आई वॉज सेइंग कि टाइपिंग पर्पज के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज फॉर टाइपिंग एंड मेकिंग करेक्शन इन द टेक्स्ट. अगर आपको कोई भी रिपोर्ट बनाना है, टाइपिंग करना है, तो आप वर्ड पैड पर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कैलकुलेटर. कैलकुलेटर नॉर्मल में यू हैव यूज कैलकुलेटर, आपने यूज देखा होगा कैलकुलेटर, बट सिस्टम में भी कैलकुलेटर होता है विच अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम. और उसका वर्क क्या होता है, कैलकुलेशंस ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है. ओके ऐसा नहीं आप कैलकुलेटर पे पेंटिंग करोगे. ओके सो इट हैज़ इट्स ओन वर्क, स्पेसिफिक वर्क है, उसके अलावा ये और कोई वर्क नहीं करेंगे. So I hope the difference between application software and system software is clear to you. Okay, now let's revise some important topics, important points of the chapter. Like two basic parts of computer are hardware and software. The parts of a computer which you can see or touch are called hardware. A group of instructions given to the computer is called software. System software is a set of programs that controls the overall working of a computer. Okay, and last one, the software that is designed to do a specific type of work is called application software. Example. Okay, tell me the examples of system software. Operating system. Okay, and tell me the examples of application software. Calculator, Paint, WordPad, and game software. Okay, now come to the exercise part. Now see here, fill in the blanks part is there. Okay, the parts of a computer which can be touched and seen are called, recently we have revised, hardware. Okay, second is the devices which are used for storing data are called storage devices. Okay, the devices which give रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग. रिजल्ट्स हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, किस डिवाइस पर हम देखते हैं, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू. ओके, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड टुडेज टॉपिक सॉफ्टवेयर. ओके, लास्ट वन, द मैनेजेस ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. Who manages? Operating system, the driver of computer system. Okay, now come to true and false part. First is the software that can do a specific type of work is called system software. No, it's wrong. Specific task जो करते हैं वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर. So this is false. First one is false. Second is a scanner is an input device. Yes, it is, because using scanner we can scan text, image and pictures and we can store in our system. Paint program is used for drawing pictures. Yes, it is. So it is also true. A printer is an output device. Yes, it's also true, because using printer we get the output on pages. So it's a kind of output device. Okay, last one is the devices through which we get output are called input devices. No, it's wrong, because the devices through which we get output are called output devices, not input devices. So last one is false here. Okay, true and false. Done. Okay, now matching part we will do in the next class. Okay, so for your homework, fill in the blank and true and false only. Okay, so that's all for today. Revise the topics well. Take care of yourself. Bye.